So very good morning to all of you. This we have seen yesterday about your uh, how to make a graph, load versus velocity ratio, load versus mechanical advantage, dead versus effort, load versus ideal effort, load versus effort lost in the friction, and load versus percentage efficiency, load versus mechanical advantages. These graphs we have seen yesterday, how to draw and their pattern, the graph pattern we have seen yesterday. Also, we have seen the review of our lecture in last class. You all join on time, then this will not happen. I have to stop in between during the lecture. You join on time, that will not disturb our class. So here you can see that yesterday we have discussed our some formulas also uh, in the we are using to solve the simple lifting machine problems. Okay, so these are the you can see the some formula uh, and okay. So this first one, you can write down on your notebook. I think so. All are sitting with your notebook and pen and paper. If not, please take your pen and paper, because this is the example or problem solving class. So in tutorial class or problem solving class, you should sit with your pen and paper. Okay. Avoid to sit just listening. You have to write down the formulas and you have to solve the example on your notebook uh, for the tutorial or your notebook of applied mechanics. I told you that for tutorial class you have to make separate notebook of 100 pages, and that will be assessed for your examination. Okay, or your progressive assessment. So first, before going, we will take the revision of the what is the velocity ratio. It's a distance traveled by the effort to the distance traveled by the load, and we are denoting that distance traveled by the effort is y, and distance traveled by the load is x. Therefore, the velocity ratio is nothing but y upon x. Okay, so this is our first formula, so you should remember this. And then your second formula, this formula we will use for solving our example. Mechanical advantage is nothing but the ratio of is load to be lifted to the effort, to the effort. Okay, to the effort. Then the efficiency eta, we have seen yesterday, it is nothing but the ratio of output of the machine to the input of the machine in percentage. When eta is always in percentage, you can write down uh, and uh, percentage you can write down like this, or like it is the input of the machine to the velocity ratio, and we have seen that eta is nothing but mechanical ratio of the mechanical advantage and the velocity ratio. Okay, so this already we know what is the velocity ratio, the distance traveled by the effort to the distance traveled by the load,
and mechanical advantage is load upon effort, and the efficiency in percentage is nothing but your mechanical. It is a ratio of mechanical advantage to the velocity ratio in percentage. Similarly, then the law of machine, that is nothing but P is equal to mw, this formula, uh, plus C. And we know that the C value is because initial effort are required uh, against the friction force to start the machine. Okay, so that is the value of C. Okay, then the maximum mechanical advantage is nothing but it is 1 upon m. That is reverse of the slope you are finding, and slope that's tan theta is by 1 divided by x2 minus x1. This graph is there, and if slope is given in terms of theta, then you can find out tan theta, and that is nothing but slope of your machine. Then the maximum efficiency you will get when the mechanical advantage is maximum to the velocity ratio, and that can be yeah. So these are the two formulas, and you should write down set time. What is time now? You should join on time and studying the class. Okay, so these are formula you remember now. I think so. आपको ये फार्मूले जो ये फार्मूले मैंने बताया है, दिस फार्मूला इज ऑलरेडी यू रिपीटेड यस्टरडे आल्सो एंड टुडे आल्सो, तो ये आपको याद हो गया होगा, आई थिंक सो. और दूसरे कुछ हमारे फार्मूले ऑन द आइडियल इफर्ट. द फार्मूला फॉर द आइडियल इफर्ट इज नथिंग बट यू कैन सी this is the PI is equal to W upon VR, है ना. Where PI is the ideal effort or W is the actual load to be lifted, है ना, without friction. So if you are not considering the friction to lift the load, then that effort is called as the ideal effort. If there is no friction. Okay. Similarly, uh, uh, your this ideal load Wi is a product of effort into the velocity ratio. So Wi is an ideal load and P is the actual effort. Okay, and then effort loss in friction is denoted by Pf, that is P minus Pi. The actual effort minus the ideal effort, it gives you the effort lost in a friction. Similarly, uh, the WF, there is ideal load lost in a friction. You can say it is nothing but ideal Wi, that is P into VR, minus W, that is the actual load. It gives you the WF, that is WF is nothing but load lost in the friction. So these formulas are very important. You should remember, and uh, and value of your efficiency. If the theta value is greater than 50%, then it's the reversible machine. If theta value is less than 50%, then that is reversible machine. And for ideal machine, that value of theta is uh, nearly or exactly equal to 50%. The ideal machine, that is mechanical advantage, is equal to VR. It means is that theta value is 100%. Okay, exactly. For ideal machine, the NA, the mechanical advantage, should be equal to the VR, when we say that the machine is ideal machine. So these are some formula, and you can recall the formulas. You can recall the formula here for the
examples. So that is A, sorry, we will take some other, that is MA, that is mechanical advantage, is equal to W upon T. W upon W upon T is the mechanical advantage, and velocity ratio, nothing but y of x. Efficiency eta is equal to divided by velocity ratio VR into 100 into 100. So it will give you the, write down each formulas with me. Don't just sitting. Okay, you should write down the formulas as I am writing. Similarly, Sir, what's the third formula? Not that understand. Third formula. third formula is the efficiency formula. Third formula, Efficiency, neta. efficiency. Okay, sir. That efficiency is denoted by neta, and that is in percentage. So eta you can write down like this. We'll erase that first. This is the eraser, and I will erase this. Then we will take a pen, write down once again eta here. Now it is clear to you. Okay. So eta is equal to Yes, sir. mechanical advantage to the velocity ratio. So I'm thinking that I'm hoping that you are writing all is the formula. You should write. Otherwise, you will not able to solve the example. And then uh, fourth one we have seen. We are recalling the formulas. We have seen fourth one, that is the law of machine. Law of machine. What is the law of machine? It is equal to T is equal to W plus C. Okay. What is the P is the effort, M is the slope, and W is the load, and C is the initial effort to overcome the friction to start the machine. And you can write down the slope, that is tan theta. Okay, and C is the initial effort of the machine. And you know that the maximum mechanical advantage, highlight this so that you can able to see where is nothing but. Okay. Now the maximum mechanical advantage, if you say, then maximum mechanical advantage formula may is equal to inverse of the slope, and inverse of slope means 1 upon m. Okay, so I think so our is going on. Inshallah it will not disturb us. Now the
maximum mechanical advantage is nothing but 1 upon m, and if you write down the maximum efficiency, that is eta max, eta max is equal to, that is the maximum uh, efficiency, but equal to, nothing but equal to maximum in mechanical advantage, okay, maximum mechanical advantage divided by the velocity ratio VR. Okay, so at sheet 1 these formulas are there, and as I think so you remembered now, the mechanical advantage is the W upon P, load upon effort, and VR, that is velocity ratio, is distance traveled by the effort to the distance traveled by the load, Y upon X. Okay, and efficiency is nothing but in percentage, eta is equal to mechanical MA advantage. Okay, so I think so we recall these formulas, and then we again recall the another formulas we have seen now, that ideal effort, that is ideal effort, we are denoted by the PI. The ideal effort, this is equal to W upon VR. Huh? It is W upon VR, where PI is an ideal effort and W is actual load to be lifted. तो यहाँ W I नहीं है, W है, जो W is nothing but the actual load to be lifted. It is the actual load, the real load to be lifted, actual load or real load to be lifted. And PI is the ideal load, is actual load divided by the VR, because we are not considering here the friction for lifting the for ideal effort. Okay, then uh, ideal load, what is ideal load in such we cannot this is not exist in real life example, but we can write down the axial load is the product of P into VR, product of P into VR, that P is the actual effort, P is the actual effort what we are uh, making, or actual effort to lift the load, actual effort to lift the load, and WI is the ideal load, and ideal load is the product of actual effort to lift the load into velocity ratio. Now we'll see the PF, that is effort lost in the friction. PF is nothing but effort lost in the friction. It is nothing but the difference between actual effort to the ideal effort. Effort load in a friction is the actual effort minus the ideal effort Pi. So it is a difference. It is very simple. It is difference between the what we are doing the actual effort to the similarly load lost in friction. Load lost in friction. If you denote WF, WF is equal to WI. That is the
actual load. Huh? Wi is nothing but the ideal load, actual load W. Okay, so if load lost in a friction is nothing but Wf, and it is nothing but the ideal load minus the uh, actual load. Now we also seen that the type of machine, how you will identify the type of machine based on the value of eta. If the eta is greater than 50%, then we will see that it is the reversible machine. It is the reversible. Sorry, reversible machine. Okay, and if eta value is less than 50%, this is irreversible. Irreversible machine. Irreversible machine. And theta value is equal to 3% at the verge of reversing. Right? Then the machine is at the verge of reversing, or in that case, the MA is equal to VR. Okay. So for ideal machine, MA is equal to VR, and for this is MA is equal to VI for your ideal machine. These are the formula and we require to solve your example. Now we'll see the example number 1. You can write down the example number 1. Example number 1, write down the velocity of certain weight of lifting machine is the velocity ratio of certain weight of the machine VR. It is given that 20. Velocity ratio is the unitless quantity. Huh? Yes, you have to write down 20. There is no Newton, kilonewton, because it is the ratio of uh, every distance traveled by the effort to the distance traveled by the load. Both are in meter. If you see, they will cut down and then there is no unit. You know? So this velocity ratio is the unitless quantity. Okay, and the velocity ratio of certain weight lifting machine is 20. Determine the effort required to lift a load of 100 Newton. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? You have to find out the P. P is nothing but effort. Effort हमको मालूम करना है. कितना लोड उठाने के लिए? The load is given 100 Newton. So these are the given data. So these are the okay. So first, when we are solving the example, first step you should write down the what is given in the example. Okay. So you can write down what is given in the example, and then one by one, as per the requirement of your formula, you should write down. So VR is equal to 20, and P we have to find out, and the W is 100. If the efficiency of machine is 25%, then here you can see that eta value is also given, that efficiency of machine is 25%, because eta we are denoting in percentage, it is given in the percentage. So all these terms are given. VR 20, that is velocity ratio, W is 100 Newton, N is 25, P is we have to find out, that is effort. है ना? Generally, what is the
we have to find out effort, then we have to use some formula, है ना. So we know that mechanical advantage is nothing but, we know that ma is equal to W upon P. Okay. So this value we know, and this value we have to find out, and this ma also. Okay. अब हम दूसरा रिलेशन देखते हैं कि ईटा इक्वल टू एम ए अपॉन आर. ओके. इंटू 100. तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दो अननोन है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं इसको? नहीं सॉल्व. लेकिन यहाँ पर एक ही अननोन है, एम ए. वेलोसिटी रेशियो हमको मालूम है, एफिशिएंसी हम लोग को मालूम है. तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन रीअरेंज द टर्म, एंड आफ्टर द रीअरेंजिंग द टर्म वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ योर थीटा, सॉरी मैकेनिकल एडवांटेज. तो यहाँ पर आप देखिए कि मैं वेलोसिटी रेशियो अगर लाऊंगा तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा. ओके. और 100 इधर से जब मैं शिफ्ट करूँगा तो 100 विल बी कम एट द डिनोमिनेटर. ओके. तो रीअरेंजिंग द टर्म, आई विल रीअरेंज अगर मैं करता हूँ टर्म को, तो यहाँ पर देखिए आप, तो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज हमको पहले मालूम करना, फाइंड द एफर्ट, रीअरेंजिंग द टर्म, है ना, थीटा इंटू आर डिवाइडेड बाय उधर जाएगा तो 100. तो वैल्यू ऑफ ईटा इज 25 डिवाइडेड, velocity ratio is how much, 20, is equal to ma कितना हो गया हमारा. अगर हम ये सॉल्व करते हैं तो ma कितना हो जाएगा हमारा, एनीबॉडी, कोई तो आंसर दो. ma हमारा हो जाएगा, अब देखो 25 इंटू 20 हम लोग करते हैं तो कितना हो जाता है, 500, है ना. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाय 100. तो 500 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ma विल बी इक्वल टू, ma इक्वल टू 5. द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज विल बी 5, है ना. आंसर थोड़ा फास्ट देना है ना. जैसे भी हम लोग सॉल्व करते जाएं, आप लोग भी सॉल्व करिए. कैलकुलेटर पेन पेपर लेकर बैठना है बेटा. हाँ, डोंट यानी मुझसे चीटिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आप सॉल्व करते हो नाइदर देन चीटिंग, यू विल गेट द वैल्यू. So this is the mechanical advantage we find out. Now here the formula we have just you can see the formula, ma is equal to, now this ma is also we know, w also we know. Now you can find out the effort, है ना. अब यहाँ पर हमको सिर्फ एक अननोन है, तो वी कैन यूज दैट फार्मूला नाउ. तो रीअरेंजिंग टर्म, दिस फार्मूला रीअरेंजिंग अगर मेरा द effort, sorry, so you can see here formula will be P is equal to, that is effort is equal to, because we have to find effort is equal to W अपनी जगह पर है, डिवाइड बाय मैकेनिकल एडवांटेज. मैं इधर लाया तो P इधर ऊपर आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज दिया, और यहाँ डिनोमिनेटर पे क्या आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज आ गया. तो इट इज इक्वल टू W कितना है हमारा, 100 न्यूटन. हमारा
P here 100 divided by 5 means 20 Newton. So it is our answer. So this we have to find out. So from this example, it is very simple example, है ना. अभी ये starting में we will solve the simple example and then we will come to the example as asking in your examinations. तो क्या हो गया. तो इसी तरह MCQs क्वेश्चन में भी एग्जाम्पल रहेंगे. हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ वो थ्योरी रहेगी. एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो देयर. यू टू कैलकुलेट, कैलसी लेकर बैठना पड़ेगा, कैलकुलेट करके फिर देन यू टू गिव द आंसर. ओके. तो दिस is nothing but to solve that the effort required to lift the load is 20 Newton. So effort required. Okay, so this is example number 1 we have solved, and the effort required, that P we have find out, that is nothing but 20 Newton needed. Sorry, 20 Newton needed to lift the load. Something problem here. So needed to lift 100 Newton. Okay, so 20 Newton effort needed to lift the 100 Newton load. That is the answer of your first example. Now we'll come to the second example. What is the example? In a certain machine, effort was found to move a distance of 30 meter. है ना. Effort कितना move करना है? The value of y is given is 30 meter. Effort इतना लग रहा है. Certain machine effort was found to move a distance of 30 meter when the load moved through a distance of 1.5 meter. Load कितना move होना है? Load that is x कितना move होना है? 0.5. If the machine is ideal, अब क्या बोल रहा है? Machine is ideal. Ideal machine. Machine is ideal. Find VR MA of the machine. तो हमको यहाँ पर machine is ideal क्या बोल रहा है? यहाँ पर जो machine है हमारी ideal machine है. Machine is ideal. Ideal machine means there is no friction. There is no friction, है ना. और इसका मतलब क्या है? Ideal machine MA is equal to VR, and if MA is equal to VR, it means the efficiency of machine will be 100%. Because in ideal machine MA is equal to VR. If mechanical advantage is equal to VR, then what is the efficiency? Efficiency will be the 100%. So from this example we know that to move a distance of 30 meter is the effort. The distance traveled by load is 1.5 meter is the load distance traveled by the load, and that is 1.5 meter. It is also given, and MA is equal to VR. So VR first we have to find out, and then we can able to find out the mechanical advantage for the ideal machine. Okay, तो यहाँ पर क्या मालूम करना है? You have to find out the VR and the mechanical advantage of the machine. So VR, we know what is the VR. First, you can find out the VR. VR, that is velocity ratio, is equal to
traveled by to the distance load is traveled by the 30 meter, and traveled by the load is 1.5 meter. To solve this, the value of VR will be how much? It will be 20. Uh, okay, it is unitless quantity here. ओके, तो ये पहला आंसर हमारा हो गया। दूसरा क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज हमको मालूम करना है। व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज? यू नो दैट इफ द मशीन इज आइडियल, then the mechanical advantage is equal to VR, because you know the efficiency is less. So therefore, is the value of MA. MA is equal to VR to how much? 20. The value of MA is also 20. I think so. This example you are understand. I will solve another example. Example number 2 is over. Example number 3. So if you take the example number 3, what is in example number 3? Here the example number 3. You can see the example number 3 is a velocity ratio of certain machine is 50. Determine the effort required to lift a load of 1500 Newton, and the efficiency of machine is 40%. तो यहाँ पर in this example we can see what is given. What is given? The velocity ratio. Velocity ratio. हाँ, ratio दिया है। कितना है velocity ratio? It is okay. Determine the effort required. तो यहाँ पर क्या मालूम करना है? अगेन हमको P मालूम करना है। एग्जाम्पल वगैरह सॉल्व किए थे। P you have to know unknown. Determine the effort बोल रहे हैं ना, effort हमको मालूम करना है। Required a lift load of, load कितना दिया है? Load is also given. Load is equal to 1500 Newton. If the efficiency of machine is equal to 50%. Now as we solve the example number 1, you have to first find out the mechanical advantage, and then you have to find out the effort required. Same example, same type का example. Now you can able to solve this. तो solve करो। पहले क्या करना है हमको? So we know that MA is equal to W upon P, है ना। तो यहाँ पर MA हमको मालूम है क्या? MA नहीं मालूम है। P मालूम है क्या? नहीं मालूम है, जो अननोन है। तो एग्जाम्पल ये प्रॉब्लम अभी ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग? नहीं यूज़ कर सकते। दूसरा फार्मूला क्या है? वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू, और efficiency is equal to MA upon into 100। ये दूसरा फार्मूला है। ये फार्मूला यूज कर सकते हैं कि हम
ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक अननोन है, क्या है, एम ए हमको मालूम नहीं है, वेलोसिटी से हमको मालूम है, मीटर हमको मालूम है, वी कैन फाइंड आउट द एम ए हम मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम करेंगे एम ए इज इक्वल टू, फाइंड आउट एम ए इज इक्वल टू, आई एम रीअरेंजिंग द टर्म, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो इंटू 100, अरे सॉरी, ईटा, पुट द वैल्यू, वेलोसिटी रेशियो कितना है हमारा, 1 also given 50. and 100. So MA we will find out. So what will be the MA here? Since we know that what happened is MA is equal to, this is how much, 5 चौक 20, 20, 200. 200. 200 कैसे हो गया, 20 5 चौक 20 तो यही हो गया, 20 ये हो गया और ये 2 जीरो अच्छा, एज इट इज रहेगा, 2000। 2000. हाँ 200 कैसे आ गया आपका, ऑलरेडी 5 इंटू 4 इज 20, एक जीरो तो पहले भी रहेगा, 2 जीरो ये दोनों का लगाएंगे हम, तो 50 इंटू 40 इज 2000 नॉट 200। ओके, then we solve it, then 2 cipher, this cipher will be cut down, this cipher will cut down, the mechanical advantage you will get, कितना आया, mechanical advantage will be 20। now again this formula we have to use, okay, so what is that formula, P is equal to, because we have to now find out the P, again this first formula and rearranging the term, so we have to find P, so P is equal to, अगर हम उसको लिखें अपॉन एम ए, है ना, तो W अपॉन एम ए, W कितना है हमारा, W is given here, W is given, that is 1500 न्यूटन, है ना, फर्स्ट 1000 डिवाइडेड बाय मैकेनिकल एडवांटेज कितना मालूम किया हम लोग ने, इट इज 12। आप लोग बोलते नहीं हो, सो जाते क्या, 20. एक ही लड़का जवाब दे रहा है बस, उसको ही इंटरेस्ट ऐसा लग रहा है पढ़ने में, बाकी सबको नहीं है क्या, तो दैट इज 1500 डिवाइड बाय 20, तो दिस 70, कितना आ गया बेटा, 75. 75, 75. वेरी गुड, 25. 75, so this the value of effort required to lift the load of 1525 न्यूटन रिक्वायर्ड, समझ में आया, तो इससे सिंपल मशीन का आपको क्या समझ में आता है, क्या समझ में आता है कि हेवी लोड लिफ्ट करने के लिए हम लोग को कितना कम इफर्ट लग रहा है, सही है ना, इससे ये समझ में आया ना आपको, तो इससे हमको क्या समझ में आता है Yes, कि sir. हाँ, सिंपल बाय यूजिंग द सिंपल Yes. लिफ्टिंग मशीन we are we can lift the heavy loads, and we are applying this concept into our construction field, we are applying in is this concept in our industries to lift the heavy loads, है ना, we are applying this concept in mechanical building of the machines, मशीन बनाने में हम लोग ये कंसेप्ट लगाते हैं, तो इसकी वजह से हमारे बहुत से जो बड़े और हेवी काम है
वो आसानी से हमारे होते हैं। हम देखते हैं हाइड्रा से हम काम करते हैं, बड़ी मशीन को शिफ्ट करने के लिए क्रेन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और पानी निकालने के लिए कुएं से पुली ब्लॉक वगैरह तो हमको एफर्ट कम लगता है ना। और जैक से, स्क्रू जैक से हम लोग, स्क्रू जैक का भी एग्जांपल इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। तो उसको अगर इतना हेवी ट्रक को उठाने के लिए जो स्क्रू जैक से इंसान इतनी आसानी से कम एफर्ट में उसको लिफ्ट कर सकता है। तो दैट इज वाई वी आर स्टडिंग द सिंपल लिफ्टिंग मशीन। तो ये आउटकम है, ये क्या है आपके, आप जो पढ़ रहे हैं आपको ये समझ में आया, आप ये सोल्यूशन कर सकते हो, आप मालूम कर सकते हो अब कि हमको अगर 2000 न्यूटन का लोड उठाना है तो कितना इफर्ट लगेगा। ये सब फार्मूला आप इस्तेमाल करके आप इजीली मालूम कर सकते हो। तो इसके लिए ये जो फार्मूले हम लोग ने लिखे हैं, इसको, ये फार्मूले इसको आप एकदम याद कर लीजिए, ताकि किसी भी टाइप का एग्जाम्पल आए तो उसमें पहले सर्च करना है कि किस पे एक अननोन है, जिसमें एक अननोन है पहले वो मालूम करेंगे। जैसे कि हम लोग ने ये एग्जाम्पल में देखा है ना, ये एग्जाम्पल जो हम लोग ने सॉल्व किए कि हमको मालूम करना है ये पी, लेकिन यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज भी नहीं मालूम है, पी भी नहीं मालूम है, डब्ल्यू हमको मालूम है, इट इज़ गिवन इन एग्जाम्पल कि कितना लोड लिफ्ट करना है हमको मालूम है। अब हम हमको एफिशिएंसी दी है, एफिशिएंसी से हम लोग मालूम कर लेंगे मैकेनिकल एडवांटेज, ये हम लोग ने मालूम कर लिया, ये मालूम कर लिया। तो नाउ वी नो द मैकेनिकल एडवांटेज एंड डब्ल्यू, दोनों चीज़ हमको मालूम है। क्या नहीं मालूम है, एक अननोन रहेगा, एक अननोन इजीली हम लोग फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करें तो ये देखें कि कौन सा फार्मूला यूज़ करके एक अननोन है और वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, उसके लिए एग्ज़ाम में या टेस्ट में ये कोई आपको अगर बताने वाला नहीं है ना। तो यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज, व्हाट इज रिवर्सिटी रेशियो, व्हाट इज द एफिशिएंसी। ये सब फार्मूले हम आप लेक्चर वीडियोस अगर देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। और आप क्या कीजिए, आपका जो ट्यूटोरियल का नोटबुक है उस पर एक पेज पे ये पूरे फार्मूले जो मैंने लिखा है आपको 13-14 फार्मूले, वो प्लीज़ राइट डाउन, वो पहले लिख लीजिए एग्जाम्पल ट्यूटोरियल क्लास सॉल्व करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, और आपको कुछ नहीं समझा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर समझ गया है तो वी विल स्टॉप हियर एंड आई विल शेयर दिस example what we have solved today and video lecture also, and you can benefit from this। स्टडी करते रहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है फार्मूले पर रहेगा, आपका थ्योरी जो मैंने क्लास किया है वो रहेगा। तो 30 अप्रैल तक जितना भी होगा उसके ऊपर मैं टेस्ट का तुम्हारा एग्ज़ाम निकालने वाला है, टेस्ट का जो पेपर रहेगा। तो आपके जो दोस्त लोग जो ज्वाइन होने नहीं पा रहे हैं, आप उनको भी बोलिए ज्वाइन होइए, क्योंकि टेस्ट रहेगा। और जो छूट गया है जिन लोगों का, वो प्रीवियस लेक्चर देखकर ओवरकम कर सकते हैं, और फिर भी नहीं समझा तो व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट है तो। सर ओके, कौन सी डेट होगा? क्या बोल रहे हैं? टेस्ट कब होगा? टेस्ट की तारीख आई थी ना, 5 तारीख से लेके 7 मई तक टेस्ट रहेगा। और ठीक है सर। जितना हमारा सिलेबस कवर आएगा 30 अप्रैल तक, उसमें से क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। तो आप अप्लाई कीजिए, और आगे हम लोग एग्जाम्पल चालू रहेगी ट्यूटोरियल क्लास में, एंड देन we will proceed for another unit। Okay, thank you for joining today। I hope so you understand all this very well। सर अटेंडेंस